हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम इंग्लिश पेडागोजी किसी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर द रिसेप्टिव स्किल। भाषा शिक्षण चारोटी दक्षता रही है LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग श्रवण कथन पठन और लिखन। तो एठार पचारि रिसेप्टिव स्किल क्योंटी लिसनिंग और रीडिंग को आम रिसेप्टिव कही और स्पीकिंग और राइटिंग को आम प्रोडक्टिव कही। Listening and speaking, listening and reading, reading and writing, reading and speaking. Receptive skill are there listening and reading. Next देखिबा listening माने श्रवण और reading माने पठन। Next which are the productive skill? Productive skill हमें देख लिए LSRW listening, speaking, reading, writing. Speaking and writing are their productive skill. Speaking and writing. Next देखिबा which of the statement is true? एमानक मध्य क्यों स्टेटमेंटा ठीक अच्छी। लैंग्वेज स्किल आर इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज स्किल आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ A and B are true, none of this above is true. Both A and R true. Next which are the phonics skill? Listening and speaking, listening and reading, speaking and reading, speaking and writing. phonics skill होची listening and speaking, सुनिबा और कहबा। Next which are the graphic skill? Reading and speaking, reading and writing, speaking and writing, speaking and listening. Reading and writing पढ़िबा और लिखिबा। Next one can express one's thought and emotion through the skill of speaking, writing, both A and B, none of this above. Both A and B. Next one receives the phonic aspect of language through the skill of listening, reading, both A and B, none of this above. Listening receive जड़े किए कौन कहला आम ताकू शुणा माने रिसीव द phonics skill except our language are through the skill of listening. Next use of the pronunciation punctuation marks is required while listening, speaking, reading, writing. Next the primary condition to learn a language is to listen, speak, read, write. Listen. Next nursery rhymes create scope for listening, speaking, both A and B, none of this above. छोटे छोटे छुआ को जो आम राइम जो गीत माध्यम पढ़ी था द्वारा कौन होता है से शुणी था और कही था बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट when sound of English language are listened by a child, it is language context, practice, exposure, all of this above. Exposure. Next action song provide scope for action माध्यम आम शिक्षार्थी को पढ़ाइले क्यों स्कोपटा प्रोवाइड होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, एंजॉयमेंट, ऑल ऑफ दिस एबो से मैंने शुणी था कही था और आनंद लाभ करते ऑल ऑफ दी एबो। नेक्स्ट listening and speaking can take place together through storytelling, retention, role play, none of this above. Role play. Listening and speaking can take place role play. Next which are the components of good speech? Pronunciation, stress, intonation, all of this above. All of these above. Next drills refers to explanation, exposure, repetition, none of this above. Repetition. Next proper articulation determines pause, pronunciation, intonation, all of the above. Pronunciation. Next intonation refers to voice
pitch of the voice, rise and fall in the pitch of the voice, none of this above. Rise and fall in the pitch of the voice, up and down होती जो हम voice टा rise and fall. Next, when a part of the word is spoken emphatically, it is pause, stress, intonation, pronunciation. Stress. Next, listening can be casual, focused, casual and focused, none of the above. Casual and focused. Next, a language context is created by drilling using the sound and language for expose, both A and B, none of the above. Both A and B. Next, drilling helps in pronunciation, speaking, mastery of patterns, none of the above. Mastery of patterns. Next, dialogues help for the developing listening, speaking, both A and B, none of the above. Both A and B. Next, multilingual skill is listening, speaking, reading, writing. Reading. Reading is a primarily intended for pronunciation, gauge, comprehension, none of this above. Comprehension. Reading टा हमें जो पढ़ी था ताहा होची comprehension. Next, reading is an input for speaking, writing, both A and B, none of this above. Writing. Next, reading aloud is essential for reading with speed, comprehension, pronunciation, none of the above. Pronunciation. Next, silent reading helps in reading with speed, comprehension, both A and B, none of these. Silent reading. जो आम साइलेंट रीडिंग करता द्वारा कौन होता है रीडिंग विथ स्पीड रीडिंग पढ़ा आम स्पीड होता है हमें बहुत जल्दी पढ़ी था एवं कम्प्रिहेंशन लाइन बाय लाइन बा डेस्क आम गोटे पैसेज को आराम से पढ़ी पारि था बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, स्कैनिंग इज गेटिंग जिस्ट, लोकेटिंग स्पेसिफिक इनफॉरमेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस अबव. स्कैनिंग आम क्या कहता हूँ लोकेटिंग स्पेसिफिक गोटे इनफॉरमेशन गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन को आम स्कैनिंग कहता हूँ. नेक्स्ट, स्कीमिंग इज मेकिंग ए जिस्ट, लोकेटिंग फैक्ट्स, गजिंग ऑल ऑफ दिस. स्कीमिंग इज रिलेटेड टू मेकिंग ए जिस्ट गोटे जिस्ट माध्यम जाना को आम स्कीमिंग कहता हूँ. नेक्स्ट, चंगिंग रेफर्स टू रीडिंग, मेकिंग सेंस ग्रुप, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नन ऑफ दिस. Making sense group. Next, a person with a poor eye span cannot comprehend, cannot scan, cannot read with speed, none of these. Cannot read with speed. Next, sub-vocalization hinders reading speed, comprehension, chunking, all of these. Comprehension. Next, finger pointing is responsible for poor eye span, poor chunking, poor stress, none of these. Poor eye span. Next, free handwriting is provided for eye-hand coordination, training for shape and letters, finger control, all of these. All of these. Next, children join different pieces of wood to make letters in tracking method, free imitation method, kindergarten method, none of these. Kindergarten method. Next, फ्लैश कार्ड आर यूज इन आम विभिन्न प्रकार फ्लैश कार्ड
देखाई शिक्षार्थी को जो पढ़े था द्वारा कौन होता है FG फ्रेंच मेथड फ्री इमिटेशन मेथड ट्रैकिंग मेथड नॉन ऑफ दिस अब फ्री इमिटेशन मेथड नेक्स्ट 4 line copies are useful for shape and size of letters, correct spelling, speed writing, all of this. 4टी लाइन मध्य जो अक्षर लिखित मनकर ताद्वारा कौन होता है स्पेस एंड साइज ऑफ लेटर्स 4टी लाइन मध्य आम मनकर ए लिखिले गोटे स्पेस एंड गोटे साइज ऑफ लेटर्स नेक्स्ट in real life one's use writing of print type cursive type both A and B none of these cursive type next in composition one needs ideas language vocabulary all of these next at the beginning the learners should be provided practice through guided composition, free composition, picture composition, none of this. Guided composition. तो यह थिला इंग्लिश पेडागोजी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन थैंक यू।